Namaste, Mr. Bhatia. Myself, Dr. Rambir Singh Meena, Assistant Professor, Sanskrit and Yoga, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth University, Jaipur. In previous slide, we discuss about typhoid. आगे भी अपन टाइफाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट पार्ट. Now focus on slide. Listen carefully. So, environmental and social factor. Enteric fever are observed all through the year. The peak incidence is reported during July to September. सबसे ज्यादा कब होता है जुलाई टू सितंबर, क्योंकि इस टाइम आपने पढ़ा हो जब ऋतु चल पढ़ाई थी तो जल के विकृत होने की संभावना ज्यादा रहती है. ठीक है, फ्लाइज का भी ज्यादा ओरिजिन होता है. ठीक है, मक्खियां वगैरह, तो इसलिए ये जो मंथ है इसमें वर्षा काल होने की वजह से, ठीक है, तो बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ के लिए अच्छा टेम्परेचर रहता है, इसलिए ज्यादा होता है. In this period considered with the rainy season and the increase in fly population outside the human body. The bacilli are found in water, ice, food, milk and soil for varying period of time. Typhoid bacilli do not multiply in water. Many of them persist within 48 hours, but some may survive for about 7 days. Some may survive for over a month in ice and ice cream. तो आइस एंड आइसक्रीम में सबसे ज्यादा ना 1 महीने तक ये सर्वाइव कर सकता है, इसलिए अपने जितना कोशिश हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए. दे मे सर्वाइव फॉर अप टू 70 days in soil irrigated with sewage under most winter condition and for half that period under drier summer condition. Food being a dead conductor of heat provides shelter to the bacilli which may multiply and survive for some time in food. Typhoid bacilli growing rapidly in milk without altering its taste or appearance in any way. Vegetables grown in sewage form or washed in contaminated water are a positive health hazard. These factors are compounded by such social factors as population of drinking water supplies, open air defecation and urination, low standard of food and personal hygiene and health ignorance. Typhoid fever may therefore be regarded as an index of general sanitation in any country. Incubation period usually 10 to 14 days, याद रखना है, but it may be as short as 3 days or as long as 3 weeks. ठीक है, यहाँ 3 day भी रह सकता है और 3 week भी रह सकता है, depending upon the dose the bacilli ingested. Modes of transmission: typhoid fever is transmitted via fecal-oral route or urine-oral route. This may take place directly through solid hands contaminated with feces and urine or cases of carrier, or indirectly by the ingestion of contaminated water, milk or food through flying. Clinical feature क्या है इसके? The onset is usually insidious, but in children may be apparent with chills and high fever. During the prodromal stage, there is biliary, headache, cough, and sore throat, often with abdominal pain and constipation. The fever ascends in a step-ladder fashion. After about 7 to 10 days, the fever reaches a plateau and the patient looks toxic, appearing exhausted and often prostrated. There may be marked constipation, especially in early stage, or tissue diarrhea. There is marked abdominal distension. There is leukopenia and blood, urine and stool culture is positive for salmonella. If there is no complication, the patient condition improve over 7 to 10 days. However, relapse may occur for up to 2 weeks after termination of therapy. During the early phase, physical findings are few. Later, splenomegaly, abdominal distension, and tenderness, relative bradycardia.
dichrotic pulse and occasionally minimus appear the rashes rose spot. ठीक है, लोग किसमें कौन होते हैं ये टाइफाइड के अंदर, याद रखना rose spot commonly appear during the second week of disease. The individual spot formed principally on the trunk in the pink pupil 2 to 3 diameter that fades on pressure. It disappears 3 to 4 days. और रोज स्पॉट किसके अंदर पहुंचे? टाइफाइड के अंदर. ठीक है, डायमीटर कितना है? 2 to 3 mm. और पिंक पीपल टाइप के होते हैं और मेनली कहाँ होता है? ट्रंक पे. Serious complication occur in up to 10% of typhoid fever patients, especially in those who have been ill longer than 2 weeks and who have not received proper treatment. Intestinal hemorrhage and manifested by a sudden drop in temperature and signs of shock, followed by dark or fresh blood in the stool. Intestinal perforation is most likely and occur during the 3rd week. ठीक है. लेस फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन आर यूरिनरी रिटेंशन, न्यूमोनिया, थ्रोम्बोफिल बाइट्स. मायोकार्डिटिस और साइकोसिस, कोलेस्टाइटिस, नेफ्राइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस. तो ये इस टाइप के हो जाते हैं. ठीक है, तो पहले में देखो नॉर्मल फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, चिल्स हो रहे हैं. ठीक है, सेकंड में थोड़ा और मॉडरेट कंडीशन है, इसमें रैशेस को हो रहे हैं जिसको बोल रहे हैं. और थर्ड में पेशेंट ज्यादा अल्सरेशन होने की वजह से, आंखों में ज्यादा घाव होने की वजह से रैश ब्लड निकलने लगेगा स्टूल के अंदर. ठीक है, और पेशेंट शॉक में चला जाएगा. और ये सारी कंडीशन फॉलो होगी. लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड पहला इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर कौन सा है इसमें? The definitive diagnosis of typhoid fever depend on the isolation of Salmonella typhi from blood, bone marrow and stool. ठीक है, Salmonella typhi का इन जगह पे मिलना ब्लड के अंदर, बोन मैरो में, स्टूल में. ब्लड कल्चर इज द necessary of diagnosis of this disease. दूसरा है serological procedure of Phelix Vidal test measure accumulating antibody levels against O and S antigen. Usually O antibodies appear on day 68 and S antibody on the 10 to 12 after the onset of disease. ठीक है, the test is usually performed on an acute serum. The test has only moderate sensitivity and specificity. It can be negative in up to 30% of culture problem cases of typhoid fever. This may be because of prior antibiotic therapy that has blunted the antibody response. On the other hand, Salmonella typhi shares 0 and H antigens with other Salmonella serotypes and has cross-cutting epitopes with other Enterobacteriaceae, and this can lead to false positive results. Such results may also occur in other clinical condition. Example, malaria, typhoid, bacteremia caused other pulmonary cirrhosis. और नए टेस्ट कुछ आए हैं, तो नए न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं ये याद रखने तुम्हें, केवल नाम याद रखना है. द recent advances of quick and reliable diagnostic test of typhoid fever is an alternative to the Vidal test, including ideal Q-Dux test. ठीक है, marketed by Swedish company, which reportedly can detect IgM germinal antibody from patient with a few minutes. Second है another rapid serological test, typhoid. ठीक है, takes 3 hours to perform. It was developed in Malaysia for the detection of specific IgM and IgG antibody against 50 kD antigen of Salmonella typhi. A newer version of test is Typhoid-M, was recently developed and detected specific IgM antibody only. ठीक है, the diagnostic test developed in the Netherlands
is based on the blend of Salmonella typhi specific IgM antibody in sample of Salmonella typhi lipopolysaccharide antigen and staining of wound antibody of an anti-human antibody conjugated to polydel particles. ठीक है, तो ये टेस्ट के नाम याद रखने हैं। लेटेस्ट कौन सा है? टाइफोड.m जो आईजीएम को ही रिकॉग्नाइज करता है, इसके द्वारा जो नीदरलैंड द्वारा विकसित किया गया, टाइफोड मलेशिया के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह ये टेस्ट के बारे में और ये आपको पता होना चाहिए। बिडाल टेस्ट, इसका अल्टरनेट बिडाल टेस्ट करते हैं, बिडाल टेस्ट भी इसी में करते हैं टाइफोड में। ये इसके रेफरेंस बुक में, यहाँ से क्वेश्चन मेनली राइट द इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ, ठीक है, टाइफॉइड फीवर और राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर, जो नए टेस्ट हैं। ठीक है, जो स्कूल के अंदर कैसे पहचानते हैं वो सारा कुछ आपको लिख देना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।